Now, bearings, as I said, that they are all matlab, bearings are standard bearings, right? So there is also a code, a dimension series code for all these bearings, right? You can recognize these bearings or denote these bearings with some specific codes. And this is ABMA is the American Bearing Manufacturing Association. So American Bearing Manufacturers Association standardized these dimension series codes, and they represent the relative size of the boundary dimensions of these bearings, cross section for metric bearings. ठीक है जी, या कोई भी bearings हो तो for example हम ये if we take this standard, तो the 2 digit represent these series. देखिए, if you look over here, this is the diameter series, right? And the width series. Now, the width series is 0, 1, 2, 3, right? यहाँ पे अगर आप देखें तो the diameter series is 0, 1, 2, 3, 4. So if you look at these, there is a dimension series which give you the combination of both of these. For example, यहाँ पे अगर आप देखें तो this is 0 series, मतलब 0 diameter series, and 0 width series. That is why you call it the 0, 0. ठीक है जी? Now, then 0, 1, then you have 0, 2. ठीक है जी? 0 and then 2. See, similarly 0, 3 and so on. इसी तरह अब अगर आप यहाँ पे देखें तो then 1 and 0, then 1, 2 and so on. तो ये हमारे पास standard है. ठीक है जी? These are standard and there is some outside diameter. देखें, when we put a bearing on a shaft, so it should have a specific bore size, which is the inner side. Nomenclature अगर आपने देखा हो पहले lecture में, so there is a bore. The bearing has some bore size in which the shaft fits in there. So the first digit designates the width and the second digit designates the diameter series, and specific dimensions are then tabulated in catalogs. So as we said, since the C10, L10, they are also cataloged. Catalog, pata hai na, what is catalog? What is catalog? A manufacturer gives you information about their products. They give you all the specifications of their products. They put it in either in a brochure or in a book or some form, and that is known as a catalog. ठीक है जी? तो वो उस कैटलॉग में you will see the specifications of all these bearings. For example, यहाँ पे if you look over here, this is a representative catalog. ठीक है जी? Representative means कि there may be some more catalogs. और आपको एक website SKF, if you go into SKF website, you will see that there are different bearings, and all these different bearings have different dimensions. This specific bearing, this 11-2 table, it gives you the dimension and load rating of a single row O2 series, जो अभी हमने ये figure में देखा, and they can be O1 series, O2, O3 series, 1-2 series, 2-2 series, and so on. And deep groove and angular contact bearing. So this is for 2 types of bearings that we talked about in the first lecture, either deep groove or angular contact, but there will be another table for self-aligning. There will be another bearing for double row, right? So this is just for a single row, and either deep groove or 2 deep groove or angular contact. Now, if you look at this information, so this is the bore of the bearing, ठीक है जी, in millimeters. बोर कौन सा हिस्सा है? It is the inner, जिसमें आपकी shaft fits in there. Then you have the outer diameter. You definitely need this because you're going to fit the bearing on something. Maybe you'll use a bearing bracket or something like that.
ठीक है जी. Then you have the width of the bearing, which you already know, the fillet radius, the shoulders किस तरह है. And now this is important कि ये जो this is the C10 of that. What is C10? What is C10? जी जनाब, what is C10? Please. Anyone? No वो one? लोड जिसपे 10% जी बेयरिंग फेल हो जाए. ना ना बस आप सीधा बताए ना, लोड रेटिंग. लोड रेटिंग बस आराम आसान बात है. दिस इज लोड रेटिंग. देखें, basic load rating. ओके. दिस इज द लोड रेटिंग. यस. एंड दिस इज फॉर डीप ग्रूव. अच्छा, ये कौन सा है? दिस इज द स्टैटिक लोड रेटिंग, सी नॉट. एंड अगेन एंगुलर कांटेक्ट के लिए C10 एंड C नॉट. तो ये वैल्यूज आपके पास इसके लोड रेटिंग्स हैं. ठीक है जी. अच्छा, नाउ इफ वी गो फर्दर तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेटिव कैटलॉग फॉर सिलेंड्रिकल रोलर bearings. So these are for roller bearings, and again this is O2 series and O3 series. Bore, outer dia, width, load rating, and the load rating is the dynamic load rating and the static load rating. Dynamic load rating, static load rating for O3 series. ठीक है जी. अच्छा, now अभी हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंट रेडियल लोड की. ठीक है जी. Now how do we calculate that equivalent load rating? You know, as I said that a bearing might have loads. For example, we have this shaft. We might have a bearing on this shaft, and that bearing might be, you know, here and here. ठीक है जी. देयर आर टू bearings, let's say. तो जैसे अभी मैंने कहा कि you might have an radial load and an axial load. ठीक है जी. तो how do we combine these loads? For example, this is my FR. ठीक है जी. तो ये अगर FR है, which is the radial load, and then I have another load which is F ए हम इसको कह देते हैं, which is the axial load. ठीक है जी. axial load and radial load. How do we combine these? ठीक है जी. तो experimentation shows कि देखिए, when a ball bearing carrying both an axial thrust load FA and um, a radial load FR. So the equivalent radial load FE that does the same damage. We talked about this, right? That it will cause damage. तो जब वो same damage करता है, देखिए, if we take this plot, this is from experimental data, and we plot this parameter, which is basically हमने क्या किया हुआ है, ये देखें, V over FR, ये हमारे पास एक term है, and we have normalized the equivalent load and the axial load with it. ठीक है जी. हमने उसको डिवाइड किया है. तो if you look at that, then the first thing is that it shows this kind of trend or behavior. These are our experimental points. देखें, ये हमारे सारे experimentation के points हैं. तो now what does it do कि ये experimental जब हम plot करते हैं and then we fit curves on these, तो वो कर्व्स हमें कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो हमारे पास ये एक लाइन है. ठीक है जी. दिस इज वन ट्रेंड अप टू अ सर्टेन पॉइंट, and then we have another trend to a certain point, and we can say that there are two straight lines basically. दो straight lines मिल रहे हैं ना. ठीक है जी. एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो यहां से यहां तक है, and then the slope of that straight line changes and gives us another segment of a straight line. ठीक है जी. तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है. now देखिए, looking at these parameters, अगर अगर हम देखें, excuse me. So what does these parameters do
is if we plot these parameters, they would give us these two straight lines. देखें यहाँ पे, can you please help me? What is the equation for this straight line? Please help me. इसके लिए क्या स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के लिए क्या इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक? y is equal to 1. y is equal to mx plus c है ना, इस तरह है ना, mx plus c इस तरह है, ठीक है जी। अच्छा, तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए व्हाट इज द इक्वेशन? y equals c. y equals c। अच्छा, एंड व्हाट इज दैट c? अच्छा, व्हाट इज y? तो वो y है हमारे पास एफ ए, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय वी एफ आर, सॉरी एफ ई ओवर वी एफ आर is equal to, so what is that c? स्लोप कोई निश्चित है ना, 1. 1, ठीक है। तो दिस इज वन इक्वेशन एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फ्रॉम, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है जी। सो दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 1, ठीक है जी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? यहाँ पे अगर आप देखें इस स्ट्रेट लाइन के लिए क्या इक्वेशन है, और y is equal to, so what is y? उसके लिए हम लिखते हैं एफ ई डिवाइडेड बाय वी एफ आर, हेल्प मी प्लीज, इज इक्वल टू बताएं जी। mx plus 1. एंड व्हाट इज 1 by e. अच्छा, mx, व्हाट इज माय x? fa divided by vfr. fa divided by vfr. डिवाइडेड बाय वी एफ आर। अच्छा जी, ठीक है जी, और प्लस 1 by e. प्लस सी, c. ठीक है जी। अच्छा, c क्या है यहाँ पे? c को हमने यहाँ पे क्या कहा हुआ है? x कहा हुआ है, ठीक है जी। सो आई विल जस्ट राइट x इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो हमारा y पैरामीटर है ना यहाँ पे, मतलब ये हम, सॉरी, इसको हमने क्या कहा हुआ है? x, ठीक है जी। दैट्स देगा ना, व्हाट इज और m? सदे m 1 by e. नहीं, m को हम स्लोप, अच्छा इस स्लोप को हम लेट्स से वी रिप्रेजेंटेड बाय, वी डिनोटेड बाय y हम इसको कह देते हैं। हाँ, इट्स जस्ट द मतलब इसके साथ इसका ताल्लुक हम नहीं कहते, दिस इज जस्ट एन इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये सिंबल्स हमने ये यूज किए हुए हैं, ठीक है जी। तो दिस इज माय इक्वेशन 1, राइट, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इसकी तो समझ आ गई ना दोनों की? y मेरे पास क्या है? स्लोप, हाँ, y मेरे पास स्लोप है, ठीक है जी। अच्छा, सो दिस इज द प्लॉट। नाउ v जो हमारे पास है ना, v, ये v की जो हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस v? v इज अ रोटेशन फैक्टर to account for difference in ball rotations for outer ring rotation versus inner ring rotation। तो अगर हमारे पास inner ring rotate कर रहा है and outer ring is stationary, तो then v is equal to 1। But if the outer ring is rotating, तो then v is equal to 1.2। just remember this कि ये जो constant यहाँ पे हम वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये वाली, ये रोटेशन फैक्टर है, या ये वाला v जो है ना, दिस इज अ रोटेशन फैक्टर। तो रोटेशन फैक्टर हमारे पास इनर रिंग रोटेशन के लिए 1 है और आउटर रिंग रोटेशन के लिए 1.2 है, ठीक है जी। नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इफ वी वांट टू कंबाइन दीज टू इक्वेशंस, ठीक है जी। अच्छा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो हमने पहले स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन लिखी,
where this straight line equation is only valid to up to here का ना, ठीक है जी. तो we have marked this position and we call this E. ठीक है जी. ये क्या है हमारे पास? E, right? So what is this E? ये देखें, FE over VFR is equal to 1 when your FA over VFR is equal to E. Is either equal to E or it is less than E. मतलब it is only valid in this portion. यहां तक वैलिड है ना. तो या तो अगर आपका x मतलब x की वैल्यू अगर आपके पास इसके बराबर है, ठीक है जी, e के बराबर है या e से, then this straight line holds. ठीक है जी. और अगर आपका ये वैल्यू e से ज्यादा है, fa और vfr अगर इस वैल्यू से ज्यादा, then this straight line holds. तो this is equal to this when fa over vfr is greater than e. Now we already know कि x is the ordinate and y is the slope. x हमारे पास ordinate intercept है जो c हमने कहा था. तो basically देखें ये क्या indicate करता है? ये indicate करता है that fe, which is the equivalent load that equals fr for smaller ratios of fa over fr. यानी if the axial load is very very small, if it is small, ठीक है जी, तो फिर क्या है कि इसका इतना असर नहीं होता. ठीक है जी. लेकिन then it will rise when its effect will rise when fa over fr exceeds some amount e. अगर इससे आगे बढ़ता है तो क्या हो जाएगा कि there will be an effect of the axial load on the bearing. ठीक है जी. तो हम क्या करते हैं कि लेट्स डू दिस, लेट्स राइट बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस इन वन. यानी ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है ना, हम इसको एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड व्हाट वुड दैट इक्वेशन बी? इफ यू एग्री विद मी, दैट इक्वेशन विल बी इक्वल टू, देखिए हमारे पास एफ ई, it is common to express these both of these कि fe is equal to xi VFR plus YI FA. अच्छा I क्या है? When there is condition 1 and तो आप एक I is equal to 1 ले लेंगे, और अगर दूसरा कंडीशन हो तो आप I is equal to 2 ले लेंगे. मतलब यहां पे डिपेंड करता है, इस कंडीशन को हम 1 कह देते हैं और इससे इस तरफ को हम 2 कह देते हैं. तो when I is equal to 1, तो आपका FA over VFR क्या होगा? दैट विल बी इन दिस रीजन. ठीक है जी. और आपका I is equal to 2 होगा तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर वैल्यू ऑफ दिस, और फिर आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है. लेकिन ये इक्वेशन जो है, दिस रिप्रेजेंट्स बोथ ऑफ दीज. फॉर एग्जांपल इफ यू आर लेस देन और इक्वल टू ई, तो ये इक्वेशन हमारे पास व्हाट विल बी दिस इक्वेशन? दिस विल बी एफ ई इज इक्वल टू x1 VFR plus y1 FA. But if you are above this region, मतलब your value is above E, तो उसके लिए एफ ई या इक्विवेलेंट लोड जो है दैट विल बी इक्वल टू x2 VFR प्लस y2 FA. ठीक है जी. तो x and y factors depend on the geometry and construction of a specific bearing. कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका how is it made. ठीक है जी. लेकिन ट्रेंड यही होगा. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, पहले हमने बात की कि बियरिंग की लाइफ जो है वो लोड पे डिपेंड कर रही है. अब हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन दैट लोड, कि व्हाट विल बी दैट लोड जिसमें हम बियरिंग की लाइफ डिटरमिन करेंगे. तो लोड्स कैन बी डिफरेंट ऑन अ बियरिंग. इट माइट बी रेडियल एंड axial. What we are trying to do is to find the equivalent load that is going to that we are going to base our life of that bearing on. ठीक है जी. तो हमने एक equivalent load अब हम मालूम कर रहे हैं, right? Now, अच्छा, they have made it very easy. यहाँ पे अगर आप देखें तो for the same equation जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे थे कि FE, what is FE? Please, what is FE? What is FE?